हैकर्स, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि काली लिनक्स को अपने एंड्रॉयड फोन में कैसे इंस्टॉल करना है। पहले हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। पहले हम टर्मक्स को अपना स्टोरेज कमांड प्रोवाइड देंगे जिससे वो स्टोरेज एक्सेस कर सके। टर्मक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, देन अलाउ। अब हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। पहला पैकेज हम करेंगे pkg इंस्टॉल गेट। अब इसके बाद हम करेंगे pkg इंस्टॉल wget, wget कैपिटल वाई। अब टाइप करेंगे कमांड git क्लोन। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाली। अब cd कैपिटल N HUNTER हाइफन रूटलेस हाइफन इंस्टॉलर, देन chmod स्पेस प्लस x स्पेस INSTALL dot sh, then dot slash install dot sh. Wait a second, type ls. Okay, we made a harass mistake, sorry. We will type again dot slash INSTALL dot sh. Now it will execute, you can see. Now we will select first option. It start downloading the net hunter. It will take 30 minutes to download. Approximately 30 minutes. It's depend on your internet speed. If you are using your mobile data, it will take 40 to 50 minutes. So let's wait. I will be do fast forwarding because it will take so much time. I will be see you in next part. What downloaded is completed. Now it's extracting root. It will take around 10 minutes to extract the root. So we will wait for 10 minutes. I will be do fast forwarding. 10 से 15 मिनट बाद
आपको ये शो करेगा डिलीट डाउनलोड रूट एफ फाइल। आपको कैपिटल एन टाइप करके एंटर करना है। यू कैन सी ये शो करेगा। अब आपको करना है टाइप CLE क्लियर। देन आपको टाइप करना है NH। देन आपको टाइप करना है sudo sudo nano nano slash etc slash resolve dot conf enter. It will ask you a password. Default password is Kali. You can enter Kali, Kali. Now you can see there is nothing. Now you enter name NAME SERBER space 8.8.8.8 span NAME SERBER space 8.8.4.4, then CTRL plus S, CTRL plus S, two lines, then CTRL plus X. Done. After this, type sudo apt update and apt pgrad upgrade dead. Then it will be a update and upgrade the all the packages. -y. Done. You can see it's updating the packages. It will take hardly 5 to 10 minutes. So I will do fast forward. डाउनलोड होने वाला है। थोड़ा वेट करते हैं। 93 94 In our next video we will cover the errors of Kali Linux
which the beginners are facing. जो एरर्स आते हैं जैसे कि कोई तो 5 सेकंड में बंद हो जाता है, 5 मिनट में बंद हो जाता है, तो उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी को ऐसा आ रहा है, एरर आ रहा हो, कमेंट डाउन, आई विल गिव यू सजेशन to solve that error. You can easily solve that error. Now you see it's downloaded, 99% downloaded. It's 100%. It will extracting template for packages. Now you have to do OK, done. Now we'll type ls, then KEF, enter. You have to make a password of 6 digit. For example, I will 1 2 3 4 5 6. Then you have to type again 1 2 3 4 5 6. You can make a random password, but the limit is 6 digits. Enter. No. N. Now we can type KEX. You can see our VNC service started. Our VNC service started. Our port 5901. You have to remember your password and port. गूगल ओपन करना है, सर्च करना है नेट किक्स एपीके। ये आपको पहला वाला डाउनलोड करना है, वर्जन 5.2.5 वाला। मेरा पहले से डाउनलोड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा नेट किक्स। मैं इसको ओपन करूँगा, ऐड अ न्यू। यहाँ अपना नाम डाल लूँगा, कुछ भी डाल सकते हो आप, जैसे कि मैं डालूँगा हैकिंग। नेक्स्ट पासवर्ड आपने जो यहाँ डाला था टर्मिनल पे, वो डालना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, डन। और यहाँ पे आपको पोर्ट चेंज करना है 5901। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। देन सेव। Not now. You will see second Kali. Yes, you can see this was my. ये मैं open करूँगा. You can see it's working. Double tap to left. You can see this is working. Applications, you can see terminal, information gathering. That's for today. We will meet you in next video. Thanks for watching.